हाय वेलकम बैक टू द वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर को मॉड्यूल को स्टार्ट किया था और चैप्टर को एंड उसमें का पहला टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर गोइंग पाइथन लैंग्वेज कि ये क्या है एंड इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, राइट। इसके बारे में आप बात करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था इंटरप्रेटर, देन मैं इसे बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया। डोंट वरी अबाउट इट। मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ अगले वीडियोस में आई एम गोइंग टू टेक सम कोड एंड उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एक इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टू द टॉपिक्स। तो आज का हमारा फंडा है कि ये पाइथन लैंग्वेज है क्या एंड इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना अपने लोकल सिस्टम में। आप इसे कई तरीके से रन कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम को, बट आज हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड वाला, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तीन वर्ड से हम अपने पूरे प्रोग्राम को या पाइथन लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। देयर विल बी मल्टीपल वर्ड्स आल्सो और देयर विल बी मल्टीपल वे टू डिफाइन अ लैंग्वेज आल्सो, बट आई एम गोइंग टू टेक दिस वे। तो वी कैन से पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सिंपल, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करता है प्रोसीजरल पैराडाइम एंड उस पैराडाइम per time. Okay, so there if this will be a waste of time. Okay, so it can support both and you can use line by line also. There will be no restriction. जैसे आप इसे यूज करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो कि ह्यूमन समझ सकता है बट कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। पिछली वीडियो का फंडा ये था कि एक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है एंड एक मशीन कोड और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो वी डिस्कस प्रीवियसली। तो आई होप आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया था इन डीप वे, राइट। आप समझते हैं ये उप्स के बारे में। तो उप्स क्या है? उप्स एक पैराडाइम है अपने कोड को मॉडलर और अच्छे से तरीके से मैनेज करना, राइट। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कुछ भी लाइक हार्ड कोड कर रहे हो, तो देयर विल मल्टीपल फाइल, let's see one file, one like p1.py, p2.py, and there will be multiple module and packages. तो उसे मैनेज करने के लिए if your writing function is good, but when you are managing your like code and your code base on oops, it will be more useful and like other person also can use very efficiently if you are using oops. And oops provide a functionality like inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, and we are going abstraction. We are going in detail in like oops concept when we will discuss about oops. Okay, don't worry about it right now. तो ये समझ में आया कि पाइथन oops को सपोर्ट करता है। उसी पर जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि we can use Python program to develop वेब एप्लीकेशन। लाइक यहाँ पे वेब एप्लीकेशन किस में बना सकते हो, फ्रेमवर्क लाइक कि जैंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, and there is many others framework or library available to develop like your web apps. Like we can build like a desktop app. You can use in system programming. We will discuss system programming in next video in like a very broad manner. So for now, just remember this: if we can use for multiple purposes, like why we are calling it general purpose, we can use our Python language in multiple purposes, not only like web applications and machine learning or system design. The system development means system level applications like IoT device. You can integrate your Python with IoT device and multiple more things you can do. Now, the first part we discussed, Python is a high level language and we use interpreter to convert into the low level language or machine code to get our like result. Now let's talk about the second part, which is installation. So we have to download Python interpreter from our Google, or you can use Firefox. If I'm going to use any browser, you can use any browser and just go on browser
I'm going to use Firefox right now. Now let's search for Python download. Just search. Now it will give you an interface like that, and you just go on the download section, and you will get your latest version. Just wait for it. The internet is little bit slow. Now let's see. Yeah, we get. Just click on this, and after that we are going here and here. Like my Python has been installed. Now click on this button, or we can say toggle, whatever, and it will give you interface like that. Use customize installation. Just click on all the features, and just like that you can use. Just click on browse, go on the my PC, or see, and if there is Python, then you just create one folder called Python 3.17 or 3.17, just like that, or just leave it there, Python 3. Okay, now click on OK, click on install, and you will get your Python. Just wait for some seconds. Now the Python is installed. Now let's check it is installed or not. Open the CMD and just wait for it, and just write here Python version 3.7 is showing to me because I installed in their other folder to me Python 3.7.0, but I installed Python 3.13.0. right now. Let's fix it. I installed my Python in my C folder, C drive, right? In C drive you see I install here, I given the path. उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा, इससे Python 3, उसके बाद स्क्रिप्ट में जाना, उसके बाद ये पाथ को कॉपी करना. आफ्टर दैट आप यहाँ पे सर्च करना इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना, उसके बाद कम इनटू द पाथ एंड क्लिक डबल क्लिक करना. आफ्टर दैट उसके बाद न्यू क्रिएट करना. यहाँ पे वो जो भी पाथ आपने कॉपी किया वो यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना, ओके करना, ओके करना. ओके, ऑल डन. नाउ लेट्स स्टार्ट CMD, and now hit py only. You will get the Python 3.13.5. Now our work is done. Now how you can write your code here? So you can write your code here as well, right? Just write 6 like I told you hello world. So we are going to write hello world, right? So you can start practicing Python code here also. Just you can calculate also. 5 plus 9 is 14. You can do a lot of things in Python shell also. Okay, now that is for this video only. I will meet you in next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please like the video and subscribe the channel. अगर Python playlist को follow करना चाहते हो, go on the dashboard and follow the playlist. Thank you so much for watching.